Hello students, today we will see lecture number 29 from the subject design and analysis of an algorithms. This is the last topic of backtracking, that we have to solve a problem of knapsack using backtracking. If you remember, in a greedy algorithm we learned a knapsack, but that knapsack was called as the fractional knapsack, where we can take items in fractions as well. But over here the knapsack which we have to do is a 0-1 knapsack, okay, where 0 represents that we don't take the object and 1 represents that we take the object as a whole. In this knapsack problem, 0-1 knapsack problem, there is nothing like taking any object as a fraction. So you know the knapsack problem, that we would be having certain items and each item would be associated with weight, and there would be a profit associated with each and every object, and we would be given the capacity of this knapsack, and we have to see what are the how many feasible solution not feasible how many solutions we can have in order to take the items with you so that we can gain maximum profit. So let us start. We will do this, okay. Okay, say for example, let we have 4 items and the knapsack's capacity will be say 8, and the weight 2 1 2 3 and 4, okay. Say 2 3 4 and 5 kgs is the weight of each item, and the profit is 3 5 6 10 value or the profit, okay. So these are the objects in kgs and these are the profits or weights or values, not weights, values which we are having. So we have to generate the state space tree, so that we have to find out all the solutions, all the group of items which we can take with us. So it would be very difficult if we take, if we generally see which one would help us or not, and that would be time consuming. So better is always to generate the state space tree. So state space tree, give me 2 seconds, I will just switch on the lights. Okay, so in order to generate the state space tree, so let me start over here. We will start with a 0 and a 0, or you can just divide it with the semicolon. Here the first 0 represents the object and the second 0 represents the profit, क्योंकि इनिशियली टिल नाउ अभी तक हमने कोई ना ही ऑब्जेक्ट लिया ना ही किसी ऑब्जेक्ट का कोई भी हमें प्रॉफिट पता है. नाउ सी, अगर मैं अपनी नैपसैक में ऑब्जेक्ट नंबर 1 लूँ, दिस ऑब्जेक्ट 1 2 3 एंड 4, ठीक है. अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 लूँ, the weight of the object is 2 plus 0 is 2 and the profit of the object is 3, so 3 plus 0 is a 3, okay. That means अभी तक जो मेरा प्रॉफिट है वो 3 है, वेट 2 है, मुझे कितना टोटल वेट चाहिए 8, राइट. सो आई कैन ऐड वंस अगेन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. 2 plus 2 is 4, 3 plus 3 is 6. Still I can add the same object once again in my knapsack. क्यों? क्योंकि knapsack में अभी भी 4 kgs की कैपेसिटी है. So let me add 1. So this will be 6 and this will be 8, right. मैं फिर से ऐड कर सकती हूँ क्योंकि अभी भी मेरा जो ऑब्जेक्ट का वेट है
वो कम ही है. So that will be 8. 8 plus 3 will be 6. 6 plus 3 will be 9. This will be 9 over here. Okay, this is 9, and 9 plus 3 will be 12. Now the question is, can I add the same object once again in the bag? No, I cannot. क्योंकि I only need my knapsack's capacity is 8. I cannot add 1 once again. Can I add 2? Can I add 2? No, because the 8 plus 3 will be 15. That will violate my knapsack's capacity. So I cannot add object number 2. I cannot add object number 3. I cannot add object number 4. Now backtrack from this place to this place. 1. Backtrack from this place to this place. जब मैंने 3 बारी सेम ऑब्जेक्ट को चूज़ किया, क्या यहाँ पे मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकती हूँ? 6 plus 3 is 9, but the knapsack's capacity is 8. That means I cannot take 2. क्या मैं ऑब्जेक्ट 3 को ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि 6 plus 4 will be 10. Can I add this 5? Object number 4? No, I cannot add. Right? Okay, go backtrack to the previous step. When I added 2 objects in the knapsack, क्या मैं यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट ऐड कर सकती हूँ? Say for example, I will add object number 2. 4 is the weight of the knapsack till now. If I will add object number 2, the weight is 4. 4 plus 3 is 7. Yes, I can add 7. And the profit will be 6 plus 5, and that will be 11. Okay. Now, after adding object number 1 twice, then object number 3, can I add object number 3 to this? No, because 7 plus 4 will be 11. Can I add object number 4? No, because the weight of the object is more. That will violate my knapsack's capacity. I only have to fill the knapsack up to the 8 kgs. Okay. Now, backtrack from this place to this place, then go to this place. Okay, firstly from this to this, then to this. Now जब मैंने पहला ही ऑब्जेक्ट इसमें डाला था, क्या मैं दूसरा ऑब्जेक्ट डाल सकती हूँ? यस, मैं आराम से डाल सकती हूँ, बिकॉज 2 plus 3 is 5. 5 plus 3 is 8. ओके, और ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैंने ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी डाला है देन आई कैन नॉट, मतलब मैं फिर से नहीं यहाँ पे डाल सकती हूँ. दैट वुड बी द सेम थिंग. ओके, 5 and 8. उसके बाद कैन आई ऐड ऑब्जेक्ट नंबर 2 once again? Yes, I can. There is no issue. This is object number 2. 5 plus 3 is 8, and 8 plus 5 is 13. Okay. Now, can I add any other object in this? No, I cannot, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो knapsack की कैपेसिटी है वो फिल हो गई है. So I cannot object number 2 once again. I cannot add object number 3. I cannot add object number 4 as well. ठीक. So this is one more reason. ओके, ये तो 2 पे था. जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट किया था, क्या मैं ऑब्जेक्ट नंबर 3 नहीं डायरेक्टली इंसर्ट कर सकती थी? यस, आई कैन. 2 plus 4 is 7. 3 plus 6 is 10. I can, isn't it? 2 plus 6, 6, 7, 8. This is 8, sorry. 3 plus 5 is, मैंने ऑब्जेक्ट 3 ऐड किया, सो 2, 4, 5, 6 is the weight, and 6, 7, 8, 9. This is not 10, this is 9. Okay, sorry for this. Okay. After that, I cannot add object number 4 to this. That is not possible. बाकी सारी combinations तो आई हैं already. Right? Okay. After that, अगर मैंने 1 को ऐड किया है, क्या मैं 4 को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती हूँ?
से फोर्थ ऑब्जेक्ट का वेट है 5 + 2 is 7 and 10 + 3 is this is 10 11 12 13 इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सो आई कैन नॉट एड एनी अदर ऑब्जेक्ट, सो बैक ट्रैक फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस देन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ठीक, नाउ ये तो हो गया, these are the things which we know that we can do and we have to do it. Now the question is, जब मेरे पास नैपसैक में कुछ भी नहीं है, क्या मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट 2 को ऐड नहीं कर सकती हूँ? ये तो 1 का स्पेस ट्री बन गया, दैट इज़ 3 एंड देयर प्रॉफिट इज़ 5। क्या मैं 2 को फिर से ऐड नहीं कर सकती हूँ? 3 + 3 is 6, 5 + 5 is 10. After that I cannot add 2 once more, that is not possible. I cannot add 3, I cannot add 4, right? यहाँ पे जब मैंने 2 इंसर्ट किया, क्या मैं 4 को कर सकती हूँ, सॉरी 3 को कर सकती हूँ? yes, that will be 7 and 11. After that I cannot add 4. क्या मैं 4 को नहीं कर सकती हूँ? yes, क्यों नहीं, आराम से कर सकते हैं। 4 को भी ऐड, 2 के बाद 4 को ऐड कर सकते हैं, that will be 8 and that will be 15. ठीक, okay. Now we are left with object number 4 only. That will be, say यहाँ पे मैं बना देती हूँ और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो बना देते हैं, अगर नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। देयर इज़ नो अदर कॉम्बिनेशन विच वी कैन ऐड एंड वी कैन हैव, और इफ़ वी हैव प्लीज़ डू दैट। से फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 4 को इंसर्ट किया, द वेट इज़ 5, द वैल्यू इज़ 10. Can I add anything else? 4 once again? No, 5 + 5 will be 10. That will violate the knapsack's capacity. So I cannot add 4 once again. I cannot add anything else. अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करूँ तो वो ऑलरेडी काउंट में आया है जब यहाँ से हमने किया है। So this is a state space tree of the knapsack problem using backtracking. Now the question is, we have to find कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो knapsack पूरा का पूरा fill out हुआ है with the profits. जैसे यहाँ पे 8 बराबर है और जैसे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट को 4 बार ही लेती हूँ, ठीक है, मेरा वेट 8 आता है और मेरा प्रॉफिट 12 आता है। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 3 को लूँ, मेरा जो वेट है वो 8 आता है, प्रॉफिट 9 आता है, दैट मीन्स प्रॉफिट कम आ जाता है। Out of all these things, out of this one, this one, this one and this one, the maximum profit जो मुझे देता है, जो मुझे yield करके देता है, that is this, by taking the object number 2 and then by taking object number 4. अगर मैं object number 2 को लूँ और प्लस object number 4 को लूँ, उसका जो वेट है वो क्या बन जाता है, 5 + 3 is 8, exactly 8 वेट, और जो मेरा प्रॉफिट अर्न हो जाता है that is equal to 15. That is equal to 15. So therefore the maximum profit which I can earn by taking the objects into my knapsack will be, so maximum profit will be 15, this is the profit, and the weight at that time will be 8 in my bag. So this is how we solve the 0-1 knapsack problem using backtracking. Okay, थैंक यू सो मच। बट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो नैपसैक की कैपेसिटी का वेट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।